Assalamu alaikum and welcome to Just Law on IQRA TV. I'm your host Ilyas Bulbulia and I'll be with you for the next hour. As our regular viewers are aware, on Just Law we normally discuss an area of law which is of interest to you, our viewers. And secondly, more importantly, Just Law is a live show. So whatever questions you have on any aspect of English law, you can call in and hopefully I can give you some advice, some guidance in relation to the questions that you have. Now, just a couple of matters before we get going. Obviously, it's a live show, so when you do call in, if it does transpire that I need to look at your documents before I can advise you further, then I'll ask you to leave your number with the control room, and then I'll arrange to look at your documents later on. And secondly, because it's a live show, obviously we're not able to take too detailed an instruction from you live on air. And if it's the case that I need to speak to you at greater length, then again I will ask you to leave your number with the control room, and then I will have a more thorough discussion with you later on. But in my experience, in the vast majority of questions that were asked live on air, I am able to deal with most of those questions live on air. So whatever questions that you have on any aspect of English law, whether it's immigration matters, whether it's family law matters, property matters, etc., whatever it is, the number that you can call on will be appearing at the bottom of the screen. Now, as always, we normally discuss an area of law which is of interest first of all, and normally what I tend to do is discuss an area relating to immigration matters, because the vast majority of questions that we get relate to immigration matters. Today what I want to do is to look at the position of those people who are in the United Kingdom as the dependent of European nationals, and more specifically those people who have married European nationals and now living in the United Kingdom as the dependent of those European nationals. It's an important topic because over the last 5 years, over the last 10 years, there has been a substantial influx of people from Europe coming into the United Kingdom. Now, as one would expect, as more people from European countries have come to the UK from mainland Europe to the United Kingdom, obviously it then follows that those who are European nationals from Europe have then got married to people in the UK who aren't necessarily European or British nationals. So for example, those who are from Portugal, Italy, Spain, etc., they've come to the UK on their European passports, and they have, for example, got married to people who have an Indian passport, Pakistani passport, a Bangladeshi passport. Now, the advantage with those who have married third-party nationals, as they are known, those from India, Pakistan, Bangladesh, or wherever it is in the world, those people who have married European nationals, the big advantage for those people is that they have then the right to live in the United Kingdom. And normally what would happen is that those people who are married to European nationals, they would apply for a residence card. A residence card is a card issued by the Home Office which confirms that this person who's from India, Pakistan, or wherever it is, they are allowed to live in the UK on the basis that they are married to European nationals who are exercising treaty rights, etc. So normally they are issued with a 5-year residence card. Now I'll look at this in greater detail after we've taken our first call. Hello, assalamu alaikum. अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा, मैं आप जी वो कॉल देख रहा हूँ माशाल्लाह, आपकी इकराम प्रोग्राम देखा है, अच्छा है, आप भी अच्छी नसीहत करें, जज़ाकल्लाह। आप कहाँ होते हैं? आप बुरा महसूस करें, मैं आपसे कांटेक्ट करना चाहूँ प्राइवेटली, कहाँ आपका ऑफिस है, क्या कुछ है? जी, हमारी ऑफिस वैसे ड्यूसबरी में है। हाँ, ड्यूसबरी में जानता हूँ, मैंने बहुत दफ़ा जाता हूँ तो जी ड्यूसबरी में। अच्छा, आपका ऑफिस है, फ़ोन नंबर क्या है आपका? जी, वो जो आप कंट्रोल रूम में है से आपको वो फ़ोन नंबर इंशाल्लाह कंट्रोल रूम आपको इंशाल्लाह वो फ़ोन नंबर दे देंगे, मगर ड्यूसबरी में हमारी ऑफिस है जी। अच्छा, ड्यूसबरी जो आपका ऑफिस है कंट्रोल रूम से हम आपका फ़ोन नंबर ले सकते हैं? जी जी, कंट्रोल रूम। तो हमारे रिश्तेदार हैं तो वो ज़रा उनको कभी कभी आपको इन्फॉर्मेशन आप एडवाइस भी कर सकते हैं, जो पूछें। हाँ जी, अभी जो लाइव ऑन है, अगर आप कुछ यहाँ तो करते हैं, मगर वहाँ पर अगर ऑफिस में फ़ोन किया जाए तो आप कोई एडवाइस भी दे सकते हैं। जी दे सकते हैं, कोई बात नहीं, आप वहाँ ऑफिस में फ़ोन कर देना, वो कंट्रोल रूम आपको प्राइवेट में मैं एडवाइस दे सकता हूँ फ़ोन पे। शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे, जज़ाक खैर। आमीन है, जज़ाकल्लाह। आपने फ़ोन किया जी। जी, अस्सलाम वालेकुम।
So just before the call, we were looking at the position of those people who are living in the UK. They may be from Pakistan, Bangladesh, India, wherever it is, but they're married to European nationals. And on that basis, they have a residence card. Residence card basically confirms their right to live in the United Kingdom, to work in the United Kingdom on the basis of the marriage to the European national. Now, the residence card which is issued is normally issued for 5 years, which is fantastic. And then it's assumed that at the end of the 5-year period, the family member of the European national would then apply for permanent residence based on the relationship with the European national. Obviously, there are conditions which need to be satisfied, but potentially when this 3-year residence card is issued, at the end of the this 5-year residence card is issued, at the end of the 5-year period, the European family member is able to apply for permanent residence, and there are obviously conditions that need to be fulfilled for that. What I want to look at is today is where within those 5 years, before those 5 years are completed, if there is a problem that normally arises is that the relationship or the marriage with the European national breaks down. Now, what happens in that situation? Is there a way in which the European family member who's living here, is that person able somehow to retain their right to continue living in the United Kingdom? Because the whole idea behind the European regulations, the European laws which govern family members living in the UK is that if you are married to a European national, then you are allowed to stay in the United Kingdom. What if the marriage breaks down? What happens to this family member, this husband or wife who's from India, Pakistan, Bangladesh, wherever? What happens to them? And that is what I want to look at today. And it's an important issue because of the large number of people who actually fall within this category. Now, there is some flexibility within the regulations which govern the situation where a marriage breaks down. The key point really here, and this is what's really different to normal spouse applications, those who are living in the UK married to British nationals. The key difference between somebody who's married to a British national and somebody who's married to a European national and living in the UK is that as far as family members of European nationals are concerned, if the marriage breaks down, that doesn't mean that the person's right to continue living in the United Kingdom comes to an end. So normally with a situation where somebody is married to a British national, once the marriage breaks down, even though the parties are still living in the UK, they might still both be working, but once the marriage breaks down and they stop living together, at that stage potentially your visa can be curtailed. However, there's a significant difference between that situation and somebody who's married to a European national. If the marriage with the European national breaks down, that doesn't necessarily mean that the person who's been issued with a residence card to live in the UK for 5 years, his or her card would be revoked, or his or her ability to stay in the United Kingdom would be curtailed. It doesn't follow in the same way that it follows in a situation where somebody is married to a British national. The reason for that is this, that under European law, as a family member, as a husband or wife, you are allowed to continue living in the United Kingdom as long as your partner continues to live in the United Kingdom and continues to work or undertake self-employment, etc. The fact that your relationship has broken down doesn't make a difference. It's only when you divorce that your right to live in the United Kingdom comes to an end. So this is a huge difference, because it may well be that somebody who's married to a European national, their relationship has broken down. But as long as the husband or wife who's the European national continues to live in the UK, continues to work in the UK, the other non-European third-party national has the right to continue living in the United Kingdom. Now,
the problem really arises where it's not a breakdown of the marriage as such which causes the problem. It's when the parties reach a stage where a divorce application is made by one of the parties, which then starts the process of for the divorce, which ultimately leads to the parties being divorced, which ultimately leads to a decree absolute being granted, which is the final stage of the divorce process, which brings the whole marriage to a complete end as far as English law is concerned. It's at that stage where potentially the European family member, the family member of the European national, it's at that stage that potentially their right to continue living in the United Kingdom comes to an end. Now, if one faces that situation, there are some options that they have, and we'll look at that in greater detail after we've taken the next call. Hello, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, thank you for calling. What's your question? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा कज़न यूरोपियन है जी, उसको तकरीबन 3 माह होने वाले इधर आए जी, ठीक है, और उसके बच्चे जो है उनको सिर्फ अभी एक माह हुआ है इधर आए जी। तो मैंने पूछना था कि वो जो चाइल्ड बेनिफिट होते हैं जी, वो क्लेम कर सकते हैं बच्चों के लिए जो अंडर 16 है, या कि अभी उनको भी 3 माह हो जाए तो फिर करनी होगी? हाँ, इसमें क्या है, जो इमिग्रेशन के लिहाज से उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ रहना, उसको काम करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करेंगे, वेदर इट्स चाइल्ड बेनिफिट, यूनिवर्सल क्रेडिट्स, जो भी है, तो जब वो अप्लाई करेंगे तो बेनिफिट्स वाले वो खुद देखेंगे कि वो यहाँ रहने वाले हैं या नहीं, और उसका खुद का रूल्स है कि कब से वो देंगे। तो इट्स आइदर 3 मंथ्स या 6 मंथ्स, जो भी है, उसके बाद उसको बेनिफिट्स भी देते हैं। बेस्ट ऑप्शन क्या है उसके लिए कि वो अप्लाई कर दे, चाइल्ड बेनिफिट के लिए भी अप्लाई कर दे। अगर कोई वो वर्किंग टैक्स क्रेडिट, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर दे, इससे उसके वीज़ा पे कोई फ़र्क नहीं होगा, कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। सर्टन बेनिफिट्स के लिए सिर्फ उसका रूल है कि उसको यहाँ 6 मंथ्स के लिए रहना ज़रूरी है। तो अगर उसने कोई बेनिफिट्स के लिए अप्लाई की और उसका कंडीशन ये है कि दे मस्ट हैव लिव्ड इन द यूके फॉर 6 मंथ्स, तो फिर वो ना कह देंगे, फिर वेट करना पड़ेगा जब उसका 6 मंथ्स यहाँ कंप्लीट ना हो जाए। मुझको चाइल्ड बेनिफिट के बारे में 100% पता नहीं है, मगर जनरली स्पीकिंग वो बेनिफिट्स का ये रूल्स है कि आफ्टर 6 मंथ्स वो बेनिफिट्स देते हैं। मगर जो भी है, अप्लाई करने में उसका वीज़ा पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर अप्लाई करना चाहे तो वो कर सकते। वो असल में उसकी वाइफ अभी पाकिस्तान में है, तो बच्चे तो आ गए, लेकिन वाइफ के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, बच्चों के पास जो यूरोपियन पासपोर्ट है, तो वाइफ का वीज़ा भी उसने अप्लाई करना है कि वो 3 माह की बैंक स्टेटमेंट का इंतजार कर रहा है और वेजेस स्लिप का, तो वो मैं कह रहा कोई उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूरोपियन में तो सिर्फ ये है ना, जब उसके वाइफ के लिए वो अप्लाई करेगा तो सिर्फ ये बताना पड़ेगा कि वो काम कर रहा है, और काम में वैसे भी कोई लिमिट नहीं है। जनरली स्पीकिंग 150-200 पाउंड से अगर ज़्यादा पैसे है, 150 to 200 अगर उसकी वेज है, थोड़ा सा वो नेशनल इंश्योरेंस दे रहा है, तो वो इनफ है। अगर वो इतनी तो 200 से ऊपर ही उसकी, हाँ, तो कोई बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 पाउंड में वो इनकम टैक्स भी उसका थोड़ा सा वो अगर शायद हो सकता है कि वो डिडक्ट करेंगे। अगर इनकम टैक्स डिडक्ट नहीं कर रहे तो उसका नेशनल इंश्योरेंस का डिडक्शन थोड़ा सा होगा। वहाँ गवर्नमेंट के ऑफिस में HMRC में उसका रिकॉर्ड भी बन जाएगा कि ये आदमी काम कर रहा है। तो 3 मंथ्स वेज स्लिप्स के साथ वो अप्लाई कर सकेगा। अगर उसको कोई बेनिफिट्स मिलती है, चाइल्ड बेनिफिट, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट्स, जो भी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे कोई ये नहीं है कि वाइफ को वीज़ा नहीं देंगे या तो केस हमारा स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको बेनिफिट्स नहीं लेना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और आखिरी मैंने ये पूछना था, अभी कोई नई अपडेट है कोई यूरोपियन के लिए? क्योंकि मैंने वैसे तो मेरे पास वो इंडेफिनेट है, मैं भी यूरोपियन ही हूँ जी, तो वो उसका कोई नेशनलिटी चेंज कर सकता है बंदा, या मुझे भी वो करना पड़ेगा वो लाइफ इन द यूके, तो वो जो या कि वो कोई उसमें कोई फर्क पड़ेगा या वही रहेगा सिस्टम? नहीं, वही है कि आपको जो लाइफ इन द यूके टेस्ट और B1 टेस्ट इन इंग्लिश वो तो करना ही पड़ेगा। और आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका जब इंडेफिनेट के बाद 1 साल हो जाएगा तो इसके बाद वो ज़्यादा हो गया, 2 साल हो गया तकरीबन। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर वो लाइफ इन द यूके तो करना ही पड़ेगा। और आपको जो B1 टेस्ट इन इंग्लिश है वो भी कोई अपडेट कोई नहीं आई है अभी? इसके बारे में कुछ नहीं है। नेशनलिटी के बारे में भी उसने कुछ नहीं डाला है। नेशनलिटी के बारे में सिर्फ उसने ये कहा है, अभी जो न्यू फॉर्म उसने इश्यू किया था अबाउट 2 मंथ्स अगो, इसमें
एक और सिर्फ कंडीशन रिक्वायरमेंट डाली है कि अगर आप काम करते हैं तो वेज स्लिप भी बता दो हमको कि कहाँ काम करते हैं। अगर आपके पास पुराने P60s है तो पुराने P60s भी डाल दो। वो थोड़ा से वो एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री देखते हैं, मगर इसमें कोई ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कंटिन्यूस 5 साल 6 साल आपने यूके में काम किया हो तभी नेशनलिटी मिलेगी, या तो अभी यू शुड बी वर्किंग नाउ, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मगर वो सिर्फ तब भी वो प्रूफ मांगते हैं। अगर आपके पास वेज स्लिप है वो बताओ, अगर आपके पास पुराने P60s है तो वो बताओ। लेटेस्ट फॉर्म में सिर्फ ये चेंज आया है, मगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कोई कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट अभी बताना पड़ेगा, कोई इनकम बतानी पड़ेगी, कोई बैंक स्टेटमेंट्स बताना पड़ेगा, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा कोई और नहीं है। नो प्रॉब्लम है, जज़ाकल्लाह आपने फ़ोन किया है, थैंक यू वेरी मच। विल टेक आवर नेक्स्ट कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा, गलती आगे भी मैं बात की थी, वो असल में एक कोई 2 क्वेश्चन रह गए, फिर उनसे कांटेक्ट किया जी। अच्छा, कोई अगर आदमी पाकिस्तान से आया हो, अगर वो बेचारा स्टूडेंट के हिसाब से आया हो और वो कुछ यहाँ अब स्टे हो गया, फिर बहुत अर्सा गुजर गया, ऐसे ही वो कर रहा है, तो उसने फ्रेंच लड़की से शादी कर ली जी। अब उसका स्टैचू क्या प्रोसीजर होगा कि उसको जो यहाँ पर स्टे मिल जाए जी? तो इसमें यह है ना कि अगर उसने फ्रेंच लड़की से शादी की प्रॉपर, वो बेस्ट ऑप्शन ये है कि सिविल मैरिज कर लो जी। उसकी सिविल मैरिज हो गई रजिस्ट्री ऑफिस में, मगर वो रजिस्ट्री ऑफिस में अब पता नहीं शरीयत के मुताबिक तो पता नहीं होगी, मुझे रजिस्ट्री ऑफिस का नहीं पता, वो जाएंगे कोई बात, रजिस्ट्री ऑफिस जाने से वो पकड़ भी लेते हैं ना जी। मगर इसमें है ना, अगर उसने इस्लामिक शादी की है तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि इस्लामिक शादी करके अगर वो दोनों रहते हैं तो ठीक है, दोनों उसको रहना चाहिए टुगेदर, थोड़ा सा प्रूफ भी बनाना चाहिए, गैस बिल्स इलेक्ट्रिक बिल्स जो भी है कि वो दोनों रहते हैं। अगर उसके फ़ोटोज़ है, फ़ोटोज़ भी होना चाहिए कि दोनों रहते हैं, थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा प्रूफ बनाओ कि ये जेन्युइन है। ओके, अगर वो हो जाए ना तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इस्लामिक शादी पे। मगर इस्लामिक शादी पे ये प्रॉब्लम है कि इस्लामिक शादी पे वो ये देखते हैं कि 2 साल से आपकी रिलेशनशिप वो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ है या नहीं, तो 2 साल तो लॉन्ग टाइम है वेट करने के लिए। इसलिए बेहतर ये है कि अगर आपका एविडेंस बन जाए तो कोई एप्लीकेशन डाल दो होम ऑफिस में, और जब एप्लीकेशन चल रहा है तो आप शादी को रजिस्टर कर दो। शादी को रजिस्टर करने से आपका जो यूरोपियन जो रूल्स है वो डिफरेंट रूल्स अप्लाई होते हैं, और इसमें वीज़ा आपको ईज़िली मिल सकती है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसका जो एविडेंस है वो तैयार करो पहले, और फिर शादी के बाद में उसको सिविल रजिस्टर करना है वो बाद में करो। हमको भाई साहब थोड़ा सा ब्रेक लेना है तो हम ब्रेक ले लेते हैं। अगर ब्रेक के बाद अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप ब्रेक के बाद इंशाल्लाह भाई आप फ़ोन कर दो। We'll take a short break. We'll be back in the next few minutes.